Hello everyone, my name is Priyanka. Welcome to today's decoding session of the Hindu. From today's newspaper, we will be discussing about the news tomato price hike. There is a news that McDonald's had stopped using tomato in their burgers, in their other meals. So why this price has hiked, we will be looking at that. Then from the editorial section, there is a topic regarding foreign policy of India with respect to Khalistan nation. But this we already discussed. So everyone, I'm requesting go to my previous videos and see about the Khalistan nation. Then the third topic is regarding the success of India's state visit to US. देखो कुछ दिनों पहले हमने इंडिया की जो स्टेट विजिट थी यूएस में उसके बारे में डिस्कस किया था। आज के एडिटोरियल में ये बोला गया है कि जो सक्सेसफुल मीटिंग रही है उसको देखते हुए क्या हम बोल सकते हैं कि इंडिया और यूएस फ्रॉम अ bilateral tie to a strategic partnership, can the strategic partnership turn to a best friends kind of a relationship that is alliance, close ally, long road finding the true peace in the Yemen? If we'll get time, we'll definitely talk about the Yemen itself in today's video. And then we'll be practicing a question with respect to meats. But before starting this discussion, an important announcement for all of you. And the announcement is because of we are getting multiple requests from the students, we have decided that along to this current affairs session, we'll be also taking a class of GS papers 1, 2, 3, 4, like complete course for the UPSC. So we'll be starting with GS paper 3, that is the science and tech portion, especially the biotech portion, which many students find it difficult and they find it difficult to connect with the newspapers as well. For example, tomorrow is Sunday, so the news will be mostly related to science and students face difficulties. So that is the reason we have decided to start with the GS paper 3, science and technology, and then we'll be coming to GS paper 2 and then 1. And at last, from September to October, we will start an optional session as well, along with the ethics and answer writing session. And the two options which we are providing you are very rare, that is the maths and botany. Alright. So I hope this announcement is clear to everyone. Like from tomorrow onwards, you will be getting a video from the GS section, GS paper 3 and the current affairs. Now let's begin with this discussion. Firstly, about the tomato price hike. See, recently, if I talk about this is India, there are two major states who are the producers of the tomato, the rich producers. First state is your Maharashtra and second state is your Karnataka. These two states are responsible for most of the production of tomato in our country. But recently we have seen that the price in the tomato is increasing. Why? Because these two states, the tomato crop in these two states have been infected with the virus. And due to that, the demand, देखो डिमांड आपका अभी भी उतना ही है, लेकिन इस इन्फेक्शन की वजह से आपका जो सप्लाई है वो कम हो गया है. तो सप्लाई हैज डिक्रीज एंड डिमांड इज सेम. तो इट इज अ बेसिक इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट कि अगर आप सप्लाई नहीं दे पा रहे हो, डिमांड आपकी उतनी ही है, यानी कि कंपैरेटिवली वो ज्यादा हो गई है, तो कोई भी चीज का जो इन्फ्लेशन है वो होगा, लाइक द राइज इन द प्राइस. तो ये सिचुएशन यहाँ पे देखी गई है कि बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन विद द हेल्प ऑफ अ वायरस, जो डिमांड है बिकॉज क्रॉप का पूरी तरह से फेलियर हो चुका है, ठीक है, तो जो डिमांड है उतनी और सप्लाई आपकी कम हो गई है, तो अल्टीमेटली प्राइस हाइक हो गया. तो ये तो हो गया रीजन की व्हाई देयर इज एन राइज इन द प्राइस ऑफ टोमेटो. बट लेट्स टॉक अबाउट द इन्फेक्शन. ये कौन सा वायरस है या फिर ये वायरस क्या होता है या इसका ट्रांसमिशन क्या होता है, ये न्यूज़पेपर में होस्ट क्या लिखा हुआ होता है,
ये मोज़ैक वायरस क्या टर्म है ना? इन सब को समझने के लिए हम थोड़ा सा बेसिक जो है क्लियर करेंगे, ताकि जो न्यूज़पेपर एडिटोरियल है उसमें कुछ खास मेहनत ना हो, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। बस टेक्निकल टर्म्स की दिक्कत होती है। So here you can look. Firstly, we will be talking that what are pathogens. Pathogens are those organisms which are responsible to cause disease. ठीक है? Pathogens वो organisms होते हैं जो दूसरे organism में disease cause कर पाते हैं, जैसे कि we are having, it could be the virus. So virus is a pathogen. Yes, we can have bacteria, and we can have certain other microorganisms. Our today's focus is on the virus because the tomato crop has been infected with the help of a virus. So what is this virus? Alright, हमारा आज का फोकस है वायरस के ऊपर. So what are virus? वायरस जो होता है, देखो इसकी डेफिनेशन को हम 3 पार्ट्स में बांट देते हैं. ये है आपके पास एक तरह से सेल्यूलर, सॉरी, नॉन सेल्यूलर एंटिटी which is responsible to cause infection, and it is a connecting link between living and non-living. So this is how we plot the definition of the virus. But again, we need to understand all these technical terms. देखो, मान लो कि एक आपके पास वायरस है, alright, and I'm saying that virus is a non-cellular structure. That means वायरस जब एनवायरमेंट में प्रेजेंट होता है, वायरस जो है अपनी खुद का कोई सेल्यूलर मैकेनिज्म को यूज करके मल्टीप्लाई नहीं कर सकता. Multiply means to increase in number. For example, human beings are responsible to increase the number with the help of a method known as reproduction. Similarly, animals do reproduction and increase their number. Plants do vegetative propagation or asexual reproduction to increase their number. Bacteria are through binary fission, fragmentation. So there are many ways of increasing the number, that is through reproduction. But viruses do not have any such mechanism or any such cellular structure via which it can increase the number or multiply. That is the reason we say it is a non-cellular structure. Okay? But this virus gets transmitted into host. होस्ट क्या होता है जिसमें ये इन्फेक्शन कॉज करता है. तो वो टोमेटो हो सकता है या कोई और प्लांट हो सकता है ना. तो जिस ऑर्गेनिज्म में वो बीमारी कर रहा है या इन्फेक्शन कर रहा है, उसको हम बोलते हैं होस्ट, दैट इज मेहमान. एंड इसका जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर होगा उसको यूज करके ये जो वायरस है वो अपना नंबर इंक्रीज करेगा, है ना. So this was the virus, a non-cellular structure, correct? He used the cellular structure of the host. यहाँ से host का मतलब क्लियर है. होस्ट तक ये पहुंचा कैसे? वाया ट्रांसमिशन. और ट्रांसमिशन के जो तरीके हैं वो बहुत हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट कुड बी एयर, इट कुड बी वाटर, it could be a simple touch, or etc. And after it gets transmitted, it starts infecting the cells of the host. Then only it is responsible to increase its number. So this is the complete mechanism. I hope it is clear. अब हम न्यूज को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं. कैसे? टोमेटो प्राइस हाइक. आपका जो मैंने कहा कि 2 स्टेट में रिस्पॉन्सिबल है. इफ आई टॉक अबाउट द महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर जो वायरस है जिसने टोमेटो प्राइस को इन्फेक्ट किया है, दैट इज द कुकुम्बर मोज़ेक वायरस. देन द स्टेट कर्नाटक, हियर द क्रॉप वाज इन्फेक्टेड विद द हेल्प ऑफ टोमेटो मोज़ेक वायरस. एंड ये देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में ये जो वायरस का इन्फेक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है.
क्रॉप्स के अंदर, एंड अल्टीमेटली इट इज लीडिंग टूवर्ड्स either partial or complete failure of the crop. So a big loss to farmers, big loss to citizens of the country because they have to pay more because of the increase in the price, right? So now I hope this word is also clear, that is the pathogens. So here we are saying that two plant pathogens have similar names. So these are the two plant pathogens, these viruses, the cucumber mosaic virus and the tobacco mosaic virus. दोनों के नाम सिमिलर है, किसी हद तक इन्फेक्शन जो है वो भी सेम करते हैं, होस्ट भी इनका सेम हो गया टोमेटो, बट फिर भी कुछ डिफरेंस है, वो क्या है हम देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं टोमेटो मोज़ेक वायरस के अंदर। ठीक है जी, टोमेटो मोज़ेक वायरस यानी कि जो कर्नाटक का केस है, कोई भी वायरस, देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म ले लो, वायरस ही क्यों, उसको क्लासिफाई किया जाता है फॉर द सिस्टमैटिक स्टडी, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि ये कौन सी स्पीशीज को बिलोंग करता है, लाइक होमो सैपियंस, सैपियंस इज स्पीशीज, कौन सी जीनस को बिलोंग करता है, what class is there, what order is there, what phyla is there, what kingdom is there. So this is how basically we classify them. उसी तरह से एक क्लासिफिकेशन का ऑर्डर हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं फैमिली, कि ये कौन सी फैमिली का वायरस है। तो उसका नाम न्यूज़पेपर में दिया गया है दैट इट बिलोंग्स टू द विर्गीवेरिडी फैमिली, which is closely related to the tobacco mosaic virus. ठीक है, so this is your tomato mosaic virus, and if I talk about the host, ये कहाँ पे इन्फेक्शन कर सकता है, तो एक तो टोमेटो हो गया ऑब्वियस क्योंकि इन्होंने किया ही है अभी, टोबैको भी हो गया आपका, काली मिर्च दैट इज द पेपर, एंड सर्टन ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ठीक है, तो अब वो टेक्निकल टर्म्स की वजह से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि दिस इज अ नॉन सेल्युलर वायरल स्ट्रक्चर एंड दीज आर द होस्ट फॉर दिस वायरस, एंड हियर इज अ ट्रांसमिशन मोड। How can it be transmitted? Via the infected seed or the infected agricultural tools or many other ways, right? So this is, a thing which we can say that this is how it gets transmitted. Now let's talk about the CMV virus, that is the cucumber mosaic virus. All right, it is more and less the same, but इसका जो host है वो थोड़ा सा ज्यादा हो सकते हैं, जैसे कि दो तीन हो कि नहीं, कुकुम्बर है, मेलन है, एग प्लांट है, टोमेटो है, कैरेट है, बट इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो इंटरेस्टिंग है। फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ दिस वायरस एफिड इज रिस्पॉन्सिबल, जो कि एक स्मॉल बग जैसे ऑर्गेनिजम्स या छोटे छोटे एंटिटी आप बोल सकते हो। इनका रोल क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, है ना, उनका जो स्टाफ होता है, तो दे सर्वाइव बाय सकिंग देयर स्टाफ। So while during this, they can easily infect. बट यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है कि एफिड अगर इन्फेक्शन कर रहा है तो मतलब एफिड ग्रो किए होंगे बहुत ज्यादा, एंड टू ग्रो द एफिड, यानी कि एफिड ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, द इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंटरमीडिएट रेनफॉल। और यहाँ से अब हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज एक सीरियस इशू है, इसका इफेक्ट आपको हर एक सेक्टर के अंदर देखने को मिलेगा, एंड अल्टीमेटली वी आर लीडिंग टुवर्ड्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर in India and yeah, in other countries as well, but we're talking with regards to India. Yeah, so this is how both the virus is infected, and the solution, biosafety standards should be there, compulsory seed treatment should be there, the materials before the fresh planting जो उसको आपको check करना चाहिए, so these are certain solutions. All right, so I wish this, I hope that everything is like clear. Now moving to our next topic, India-US relation. इससे बहुत ही कमाल और इंटरेस्टिंग रिलेशन है। अभी जो इंडिया का जो स्टेट विजिट था यूएस के अंदर, इट वाज सो सक्सेसफुल दैट इसका जो सेलिब्रेशन है, द हैप्पीनेस फॉर द सक्सेसफुल विजिट ऑफ पीएम मोदी in the US as a state visit is still celebrated. And on the behalf of that celebration, on the behalf of that happiness,
The writer has written this editorial that should India and US make their friendship more advanced and they turn to the as an allied partner. बेसिक आप इसका मेरी प्रीवियस वीडियो में प्लीज देख लीजिए बिकॉज इंडिया यूएस हम कर चुके हैं। यहाँ पे एक बस ओपिनियन बेस्ड चीज इन्होंने बोली है कि इंडिया और यूएस की जो पास्ट के जो रिलेशन है वो बहुत ही ब्लडर रिलेशन थे। यूएस नेवर सपोर्टेड इंडिया, नेवर। लाइक वी कैन टॉक हियर, इट वाज अ टाइम ऑफ द सीनो इंडिया वॉर, मोस्ट फेमस वॉर दैट इज 1962 जब चाइना ने इंडिया पे अटैक किया। एंड व्हाट वाज द मेन रीजन? The disputed boundary, that is the Upsc area and Arunachal Pradesh. So regarding this area, these areas, sovereignty of these area, एक dispute हो गया था, so we can call it a border dispute, जो कि border dispute आज भी इंडिया चाइना के बीच में है। China attacked India. During this attack, the president of US, that is the Lyndon B. Johnson, denied to help India. And इसके बाद एक और ब्लंडर होता है 1971 में जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ। देखो, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर का वैसे समझ सकते हो ये अपना इंडिया है, ठीक है। तो पहले ये था आपके पास वेस्ट पाकिस्तान और ये आपके पास ईस्ट पाकिस्तान, फिर इसको हमने बांग्लादेश बनाया और ये बन गया बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जिसमें इंडिया ने इनकी हेल्प करी थी। और इस टाइम पे जो यूएस है दे वेंट डायरेक्टली टू हेल्प द पाकिस्तान। तो इन सब एग्जाम्पल से ये बहुत ही क्लियर है कि यूएस का जो रवैया इंडिया की तरफ था वो बहुत ही रूट था। दे वर नेवर इन फेवर ऑफ इंडिया। बट अभी अगर आप रिसेंटली देखेंगे बेटा एग्रीमेंट का साइन किया गया है, राइट? द बेटा एग्रीमेंट, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, फाइटर जेट इंजन जो है उनमें एक टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर है। इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लिया गया है। अभी जो स्टेट विजिट हुई है उसमें भी बहुत सारे एग्रीमेंट हुए। तो ये सडन एक सडन जो शिफ्ट है वो कैसे हुआ इसके अंदर? क्या इंडिया सक्सेसफुल रहा है अपना एक दबदबा जमाने में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे? यस। After 2014, I'm not admiring Mr. PM Narendra Modi ji, but yes, for XYZ reason, during his tenure, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं इंडिया का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ा है। और इंडिया यूएस की रिलेशनशिप को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि एक तरह से हमारा जो मिलिट्री स्ट्रक्चर है या फिर जो एरोस्पेस की कैपेबिलिटीज है उसमें बहुत ही ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा और वी कुड से इट वुड बी लाइक अ क्वांटम जॉब। लेकिन इंडिया की तरफ यूएस का जो अटेम्प्ट है कि इंडिया को अपनी तरफ लाना एक अलायंस के तौर पे एक बेस्ट एलाई कंट्री बना के, वो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज यूएस जिस तरह का पार्टनर चाहता है, जिस तरह का अलाई बनाना चाहता है, इंडिया वो कभी फुलफिल नहीं कर पाता, ना कर सकता। आज के कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं। क्यों? इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो एकदम नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है, डिप्लोमेटिक, बहुत ही ब्यूटीफुल डिप्लोमेटिक पॉलिसी जिसमें वो किसी की साइड नहीं लेता है, हमेशा ऑटोनोमस रहता है। आप रशिया यूक्रेन के वॉर में भी देख लीजिए, उन्होंने किसी की साइड नहीं, ही वाज न्यूट्रल। So having such kind of a beautiful diplomatic policy, इंडिया यूएस जैसी कंट्री के साथ ऐसा एग्रीमेंट नहीं साइन कर सकता जिसमें उनको सबका कि उनके ओपिनियन के हिसाब से काम करना, राइट? So yes, possibilities are good to make the relations better, but not as a allied partner. We have a miles to go with respect to that case. तो जब पीएम मोदी की जो स्टेट विजिट है इतनी सक्सेसफुल रही है, तो जब मैं बोलती हूँ कि मीटिंग या विजिट सक्सेसफुल है, इसका मतलब मैं क्या बोल रही हूँ कि ये बहुत ही क्लियर है कि इंडिया का जो इंडेक्स है कंट्री के नेशंस में वो बहुत ही टॉप पे जा रहा है। इंडिया एज अ कंट्री इज बीइंग रिस्पेक्टेड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज as India is a fastest growing economy these days. So let's compare the previous prime ministers from the Modi ji. नेहरू जी जो है उनकी विजिट इतनी सक्सेस नहीं थी। लाल बहादुर शास्त्री जी की जो विजिट है एंड तक देखा गया कि हो ही नहीं पाई। इंदिरा गांधी जी की जो विजिट है दैट वाज ब्लंडर।
और इसके लिए अभी भी इंडिया की अलग थियरी है, यूएस की अलग थियरी है कि व्हाट वेंट रॉन्ग। या मनमोहन सिंह जी जो है, मोदी जी से पहले जो है, इन्होंने काफी अच्छा काम किया था विद रिस्पेक्ट टू द मीटिंग्स। तो अभी जो स्टेट विजिट है उसमें काफी डिफेंस को लेके डील्स हुई है। लेकिन जो मनमोहन सिंह जी हैं, उन्होंने भी अपने टाइम पे कोशिश करी थी, एंड ही सेड दैट द न्यूक्लियर एनर्जी इज अ सेक्टर जिसपे इंडिया और यूएस जो है साथ में काम कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या आता है कि ये जो न्यूक्लियर एपेटाइट है, अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन ना मैं आप ही लोगों के लिए छोड़ देती हूँ। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू read that what was the Buddha is smiling mission. That is, बुद्धा is smiling mission। और इंडिया का जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पोखरण में, उसके बारे में। ठीक है, इंडिया का जो फर्स्ट पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसके बारे में आप मुझे बताएंगे पढ़ के। राइट, यू कैन इवन एक मूवी भी है पोखरण करके, जिसमें इंडिया ने जो टेस्ट किया था पहला न्यूक्लियर टेस्ट, वो कैसे किया था। ऑल्दो आई विल नॉट से कि पूरा फैक्ट्स डेटा उसमें सही है, बट यू कैन हैव एन आइडिया दैट हाउ इंडिया डिड दैट। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज ऑन यू गाइस अबाउट द न्यूक्लियर कोऑपरेशन। नाउ coming to the main question with respect to the today's editorial, especially with respect to the tomato price hike, how do subsidies affect the cropping pattern? Like subsidies means given subsidies are given by government, and how they affect the cropping pattern, the crop diversity, economy of the farm. Again, 250 words, 15 minutes question, and 15 marks question, and 7 minutes. So this is it for today's discussion. I hope you like the video. Please subscribe the channel, like and share. And from tomorrow, as I announced, we'll be getting the video on the GS paper 3 section as well. Thank you so much.